What's up? Can you hear me? Give me a like. Give me a shout out to know that you can hear me. मैं हूं आपका साथी जिमी ऑल्टर और हम दोबारा जुड़ रहे हैं इस चैनल पे क्रिकेट की बातें करने, क्योंकि कल है दोस्तों पहला ओडीआई इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका। इतना कुछ हो चुका है टेस्ट सीरीज के चलते और फिर टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज दैट इंडिया और मेनी फेल्ट इंडिया वर द फेवरेट्स गोइंग टू दैट सीरीज। और फिर एक 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 शून्य की सीरीज लीड के बाद जो लगातार दो मैच हारे हमारे खिलाड़ी, उसके बाद बहुत सारा चर्चा हुआ कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। और फिर उस जीत के सिर्फ 24 घंटे बाद विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से अपना इस्तीफा दे दिया और बहुत सारा चर्चा हुआ है कि उस फैसले के पीछे क्या डिसीजन था, क्या राज था, क्या फैक्टर्स थे। आई ऑलरेडी डन 2 shows ऑलरेडी ऑन दैट टॉपिक हियर। आज हम बात करेंगे दोस्तों वनडे सीरीज के बारे में। 3 मैच की श्रृंखला है। Of course, India did win the ODI series. What was it? 6-1. पिछली बार जब 4 साल पहले 2018 में टीम ने खेला वहां पे वनडे सीरीज, तो क्योंकि द फोकस इज नाउ शिफ्टेड टू वनडे क्रिकेट, बहुत सारे मुद्दे हैं जो फैंस और मीडिया और प्लेयर जो हैं वो बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स द फोकस ऑन विराट कोहली। ये पहला वनडे सीरीज है जहां पे विराट कोहली बहुत बहुत समय के बाद कप्तान नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज एज वी ऑल नो, इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर ऑफ स्पीकिंग, तकरीबन 1 महीने 5 हफ्ते जो भी था पहले, बीसीसीआई ने एक स्क्वाड को अनाउंस करते समय स्क्वाड उस न्यूज के बाद एक लाइन में लिखा था कि हमने विराट कोहली को रिप्लेस कर दिया रोहित शर्मा के साथ। उस पर भी मैंने काफी टिप्पणी दिया है अपना इस चैनल पे और अपने कॉलम्स पे। अब कोर्स यहाँ रोहित शर्मा नहीं है, रोहित शर्मा इंजर्ड है, वो इंडिया में बैठे हैं। तो केएल राहुल जो कि वाइस कैप्टन रह चुके हैं, वो हैं कप्तान इस सीरीज के लिए। एंड द वाइस कैप्टन इज जसप्रीत बुमराह। ऑन शॉर्ट नोटिस ही वाज एलिवेटेड टू दैट लीडरशिप रोल। इसका मतलब ये दोस्तों कि विराट कोहली कुछ किसी भी फॉर्मल फिक्स्ड लीडरशिप रोल में नहीं दिखेंगे इस सीरीज में, बट हम सभी चाहेंगे कि विराट कोहली का जो एक हाई स्टैंडर्ड है एज अ बैट्समैन, वो देखने को मिले इस सीरीज में। बैटिंग को, वी ऑल नो दैट ओवर द लास्ट 2 years his टेस्ट बैटिंग, खासकर 2021 में द टेस्ट बैटिंग हैज बीन ऑन अ डिक्लाइन, बट इन वन डेज ही इज ओवरऑल बीन प्रीटी डिसेंट। मैं यहाँ पे स्टैट्स निकालता हूँ आपके लिए। 2020 की शुरुआत में, मतलब पिछले 2 साल में दोस्तों, 12 वनडे मैचेस में विराट कोहली ने बनाए हैं 560 रन एट एन एवरेज ऑफ 46.66 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 90। तो इसका मतलब है कि इनका फॉर्म खराब नहीं है। हाँ, हम मान सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था, एक हाई स्टैंडर्ड जो विराट कोहली ने खुद सेट किया, इनके आंकड़े दिखाते हैं कि वो उस लेवल पर रहेंगे। बट स्टिल, how many batsmen would be dissatisfied with 560 runs in 12 ODIs, average almost 47 and strike rate 90? Pretty good, I say. But क्योंकि 2 साल से ऊपर हो गए और विराट कोहली ने किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं लगाया, तो उनके फैंस से उम्मीदें हैं फैंस का कि विराट कोहली जल्द उस टॉप गियर में आएंगे। So, on the one hand, one of the major talking points is how will the Indian team fare when Virat Kohli is not captain, and also how will the Indian team fare when the appointed captain रोहित शर्मा अभी इस सीरीज में नहीं है। केएल राहुल की बात करें तो उनकी आईपीएल कप्तानी को छोड़ के, जो मेरे राय में काफी फ्लैट रह चुका है for various factors. I think Anil Kumble's coaching style, perhaps, or the coaching influences he had, did not sit well with KL Rahul. That's just my thought. बट ओवरऑल अगर हम देखें आईपीएल के बाहर, केएल राहुल के पास कोई कैप्टनसी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम कर्नाटका की बात करें या कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर इंडिया ए के साथ, ही इज नॉट, देयर जस्ट नॉट इनफ लीडरशिप एग्जांपल्स टू सी कि केएल राहुल की कप्तानी कैसी रहेगी यहाँ पे एक ओडीआई सीरीज में। दूसरी बात कि केएल राहुल को अक्सर ओपनिंग रोल में लिया गया है वनडेज में, कभी कभार मिडिल ऑर्डर में, पर ज्यादा नंबर 3 पे, पर ज्यादातर इनको सफलता मिली है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने का। इफ वी सी 2 साल में 2020 से केएल राहुल ने ज्यादातर बैटिंग किया है मिडिल ऑर्डर में, जहां पे इनके आंकड़े मैं आपको बताऊंगा। 554 runs दोस्तों at an average of 69.25. That is outstanding. But here comes the key part, the strike rate, almost 110, 109.92. तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि इनका जो अच्छा एक रोल है वो मिडिल ऑर्डर पे 4, 5, 6
उसके आसपास। बट जब जब रोहित शर्मा नहीं है और जब शिखर धवन, जिसके बारे में मैं बात करूंगा इस शो के चलते, जब शिखर धवन की फॉर्म को लेके काफी कुछ दिक्कतें हैं, where does KL Rahul think he's best suited? Where does Rahul Dravid best think he's suited? Where does India's batting coach think that he's best suited? क्योंकि यहाँ पे आंकड़े आपको साफ बताते हैं कि पिछले 2 साल में KL राहुल की जो सक्सेस रहा है मिडिल ऑर्डर में, that seems to be where he bats. He can finish matches, he can explode in the death, he can get you big totals, he can help you chase big totals, big targets. But in Rohit Sharma's absence, does India want to put KL Rahul back in the opening slot? Or do you want to perhaps give a debut to someone like ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने आईपीएल में जबरदस्त बैटिंग करी है पिछले 2 सीजन में, ऊपर से इनका जो प्रदर्शन रह चुका है रिसेंटली अक्रॉस फॉर्मेट्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन खासकर विजय हजारे ट्रॉफी में, अगर आप नहीं जानते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों इंडिया का प्रीमियर लिस्ट है, मतलब वनडे टूर्नामेंट है, और उसमें जिस तरह की बैटिंग किया है ऋतुराज गायकवाड़ ने, इट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। आंकड़े उनके बाद मेरे उनके आंकड़े नहीं है, बट हाँ नहीं है, सॉरी मैंने एक नोट्स बनाए थे यहाँ पे। ऋतुराज गायकवाड़ वाज द टॉप स्कोरर। उन्होंने 5 मैच में, ये देखिए, सिर्फ 5 पारियों में 603 रन बनाए, और उन 5 पारियों में दोस्तों 4 1 2 3 4 सेंचुरीज, 4 शतक। ऐसे युवा बल्लेबाज को, जिनका चर्चा काफी हो रहा है एज एन ओपनिंग ऑप्शन एटलीस्ट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, क्यों ना इनको मौका दे। रोहित शर्मा नहीं है, 3 मैच का श्रृंखला है, इनको चांस दो, ग्रूम करिए इनको। अगले साल एक वर्ल्ड कप आ रहा है, लेट केएल राहुल, मेरा ये मानना है, लेट केएल राहुल बैट इन द मिडिल ऑर्डर, लेट ऋतुराज गायकवाड़ ओपन विद शिखर धवन दिग्गज खिलाड़ी, मिस्टर आईसीसी अगर हम इंडिया की बारे में बात करें, ही हैज सक्सेस इन साउथ अफ्रीका, ही हैज सक्सेस इन ओडीआईज अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ, मेरे ख्याल से वो 36 के हैं या 36 के होने वाले हैं शिखर धवन। इनकी एज क्या है इनके, शिखर धवन, हाँ जी 36 साल के हैं, तो ऑब्वियसली एज इज नॉट ऑन हिज साइड, बट व्हाई नॉट। अगर हम बात करें ब्रीफली शिखर धवन के बारे में, टेस्ट मैच से वो बाहर हो चुके हैं काफी साल से, T20 में उनकी जगह नहीं बन रही है, T20 वर्ल्ड कप में वो उनकी जगह नहीं बना। इफ ODIs are the only format you have left for शिखर धवन, then give him the respect, give him the long rope like you've given to Pujara and Rahane. इनको भी एक लंबी रस्सी दो until the 2023 वर्ल्ड कप। आई स्टिल बिलीव इंडिया के ट्रैक्स में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है अगले साल के विश्व कप में, ODI विश्व कप। तो लेट शिखर धवन ओपन इट नाउ and put someone like a ऋतुराज गायकवाड़ uncapped at this level. Let him see what he can be, what he can take out of batting with Shikhar Dhawan. ये बहुत अच्छा मौका है। Let KL Rahul bat in the middle order and see what he can do. मैं कुछ सवाल लूंगा कि यहाँ पे सवाल काफी आ रहे हैं बातों में। Parth Tasama, hi, how are you? Good to see you again. Nofil Zak, who will be the all-rounder, Shardul or Venkatesh Iyer? Good question, my friend. देखिए, फॉर्म के चलते अगर हम वेंकटेश अय्यर की बात करें, ही गॉट इनटू द इंडियन टीम बिकॉज ऑफ एन आउटस्टैंडिंग आईपीएल फॉर केकेआर, बट वहां पे उन्होंने ओपनिंग किया था, ऑल्सो बोल्ड सम वेरी वेरी हैंडी सीम। अब क्या है कि वंस ही गॉट हिज इंडिया चांस इन द मिडिल ऑर्डर, उनको ये बोला गया कि भाई वेंकी, तुम मिडिल ऑर्डर में ही खेलोगे, हमारे पास ओपनिंग ऑप्शन बहुत है। तो वेंकटेश अय्यर ने क्या किया, वो वापस गए डोमेस्टिक क्रिकेट में, और विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने मिडिल ऑर्डर में, मतलब वो अपने एक प्रेफर्ड स्लॉट से, ओपनिंग से, वेंकटेश अय्यर वेंट डाउन टू द मिडिल ऑर्डर एंड ही बैटेड देयर। व्हाट वर हिज रिजल्ट्स? आई विल गिव यू हिज नंबर्स। वेंकटेश अय्यर ने दोस्तों विजय हजारे के 6 पारियों में 379 runs and an average of 63.16, and get this, इनका स्ट्राइक क्या था दोस्तों, 133.92, 2 शतक, 1 अर्धशतक। मतलब दैट शोज कि इस लड़के ने कितना शॉर्ट टाइम में अपने आप में वो काबिलियत उभर के वो लेके आए थे। He was told to go in the middle order for his domestic team, MP. He went back, he did the job. अभी हार्दिक पांड्या एब्सेंट है, तो उनको एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में उन्हें वहां पे लाया गया था। अब गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन नौफिल, बिटवीन वेंकटेश अय्यर और शार्दुल ठाकुर, देखिए शार्दुल ठाकुर has proved himself in the short span of time that he's been playing. I say short because he's never been consistently in the 11. कभी आते कभी जाते, तीनों फॉर्मेट में, but he now seems to be the flavor of this season. But क्या आप उनसे ऐसे रन एक्सपेक्ट करते हो जो आप वेंकटेश अय्यर से एक्सपेक्ट करते हो? आई डोंट थिंक सो. Depends how many overs the team think they can get out of
अय्यर, शार्दुल ठाकुर आपको 10 ओवर दे सकते हैं एक वनडे में। वेंकटेश अय्यर इन्हीं 6 विजय हजारे ट्रॉफीज मैचेस में जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, उन मैचेस में ही बोल्ड 10 ओवर्स ऑल द टाइम। So that shows that he's at least in the rhythm of bowling, but it's very, very different bowling 10 overs for Madhya Pradesh and going and bowling 10 overs when you're still at a fledgling stage of your career in a country like South Africa. So I don't know. I would still say if you want more experience, go towards Shardul. Shardul can come and get you 25, 30 runs फटाफट. But if you want, अगर आपका टीम collapse करती है और आपको थोड़ा एक स्टेबल बैट्समैन चाहिए डिस्पाइट हिज इनएक्सपीरियंस एट दिस लेवल, आई थिंक वो सिर्फ दो तीन मैच खेल चुके हैं Venkatesh Iyer, I would still go for Venkatesh Iyer. But then that means you have to get a lot of overs out of him as well. It's not a straightforward decision, my friend. दूसरा सवाल पे आते हैं हम सर्वेश बोर्ड के ऋतुराज विल गेट अ चांस लुक आई होप क्योंकि ये 3 मैच का श्रृंखला है कम से कम एक मैच में तो इनको मौका मिले आइडियली इनको तीनों मैचेस में he should get a chance for the reasons that I just outlined. Let KL Rahul bat in the middle order and give Rituraj Gaikwad, who's the flavor of this season in white ball cricket, respect and honor the form that he's shown for Maharashtra in the domestic cricket and give him a chance. It's a great opportunity. It's not a long series. It's only 3 matches. 3 मैच दोस्तों 5 दिन के अंदर. Give him a chance, and I would love to see him open with Shikhar Dhawan. Partha Sama, do you think Gaikwad getting a chance here? Yes, I've already asked that question. Karthik Matpal, hi Jimmy. If Iyer performs and Pandey makes a comeback, can we play both in playing 11 in future? It's a good question, but हार्दिक पांड्या अगर bowling नहीं कर रहे हैं, I don't know how he gets into it. एक टाइम था जब मैं हार्दिक पांड्या को सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पे खिला था, but I don't see it now. It all depends. I guess the answer to your question, Karthik, lies in how well Venkatesh Iyer does in these 3 matches. He's going to play. I believe he's going to play all 3 matches. It just goes. It depends on how he goes as a bowler and as an all-rounder. But if, you've asked, if they both get fit, it's foreseeable. But I wouldn't see it happening in an ODI World Cup. Maybe in a couple of bilateral series leading up to the World Cup. But again, that'll be very, very harsh on someone like a Shardul Thakur. Possible. Tell you're playing 11. चलिए, I was going to do this a little later, but since सर्वेश आपने ये सवाल पूछ ही लिया, I'm going to go with, and this is also going to link into the question from Anik, who's saying, hello sir, will India go with 4 spinners and 4 seamers and 1 spinner, or 3 seamers and 2 spinners? I think the answer to that is 1 spinner. साउथ अफ्रीका में बहुत रेयर है कि आप 2 स्पिनर्स खिलाते हो. मानता हूं कि 4 years ago when India won that ODI series 6-1, that was when we saw the best of Kuldeep Yadav and Yuzvendra Chahal together. It was a fantastic period to be watching India play ODI cricket and in fact white ball cricket. But अभी क्या है दोस्तों, कुलदीप इस टीम से बाहर है. Yuzvendra Chahal is your specialist spinner. Ashwin has also been recalled. I think his last ODI was, if I'm not mistaken, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, जो कि इंडिया हारी थी क्या 4.5 साल पहले. If it's a toss up between Ashwin and Chahal, despite Ashwin's good form, I might just see Chahal getting the nod because he's been a more consistent player for India in white ball cricket. Ashwin did of course come back. So just going back to the question from Sarvesh. सॉरी, क्वेश्चन आया हिमांशु से. हिमांशु भाई, मैं ऑलरेडी केएल राहुल के बारे में बात कर चुका हूँ और मैं, क्योंकि आपने सवाल पूछा, अभी स्ट्रीम पे अभी जुड़े हो, तो यस, आई फर्मली बिलीव दैट केएल राहुल शुड बैट इन द मिडिल ऑर्डर फॉर द रीजंस आई आउटलाइन अर्लियर ऑन दिस लाइव स्ट्रीम. इनके जो आंकड़े हैं पिछले 2 साल में मिडिल ऑर्डर में, एवरेज ऑलमोस्ट 70, स्ट्राइक रेट about 110. He's proven himself as a finisher, as someone who can add crucial runs to the middle order. तो मैं ये चाहूंगा कि केएल राहुल को इंडिया मिडिल ऑर्डर में ही रखें और आप ओपनिंग करें, जैसे कि मैंने कहा था, शिखर धवन और क्या नाम है उनका, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ. हाँ, बट गोइंग बैक टू द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सर्वेश बोर्ड के माय 11. चलिए, आई एम गोना गो विथ शिखर धवन, आई एम गोना गो विथ ऋतुराज गायकवाड़, आई एम गोना गो विथ क्या नाम है इनका, अभी मैं नाम बोल रहा हूँ यहाँ पे, Virat Kohli at number 3. 4, I'm going to have Shreyas Iyer. 5, I'm going to have Venkatesh Prasad. 6, I'm going to have Rishabh Pant. 7, I'm going to have, or I might put Rishabh Pant higher depending on match का situation क्या है. नंबर 7 पे मैं डालूंगा शार्दुल ठाकुर को.
नंबर 8 पे डालूंगा युजवेंद्र चहल को, नंबर 9 पे मैं डालूंगा हमारे बॉलर्स को ना जसप्रीत बुमराह। लोग कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को शायद इन तीनों मैचेस में नहीं खिलाएंगे बिकॉज ऑफ हाउ मच ही इज बोल्ड इन द टेस्ट सीरीज, बट आई एम स्टिल गोइंग टू पुट जसप्रीत बुमराह। उसके बाद हमारे पेसर्स को ना, मैं यहाँ पे नाम बोल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पुट, हाँ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट भुवनेश्वर कुमार's form has sort of tapered off in white ball cricket, IPL खेलते हैं, आईपीएल की अक्सर वो शुरुआत अच्छे करते हैं, and his form sort of tapers off. He's injury prone, but आपको याद दिला दूं कि पिछला जो व्हाइट बॉल सीरीज था इंडिया का श्रीलंका में, वो भुवनेश्वर कुमार was there. So if he's fit and ready for selection, I'm going to go for him. और जो मेरा आखिरी बॉलर है, it's going to be दीपक चहर, because दीपक चहर ने जब भी बॉलिंग करी है, more or less he has shown that he has what it takes. पेस उनका थोड़ा थोड़ा ज्यादा है भुवनेश्वर कुमार से, और जैसे कि उन्होंने श्रीलंका सीरीज में दिखाया था, he scored that 50 not out in a very very crucial match. तो ओवरऑल he also proves that, हालांकि मैं उनको ऑलराउंडर का टैग नहीं दूंगा, बट ओवरऑल he is there. So who does that leave out? हाँ, यहाँ पे मैं स्क्वाड कर रहा हूँ. That leaves out Mohammad Siraj from my first 11. That leaves out Jayant Yadav. That leaves out Surya Kumar Yadav. Why I've not picked Surya Kumar Yadav is I still feel that he's a bit too inconsistent. I would rather see someone like a Shreyas Iyer play. And when you have Virat Kohli batting at 3, उनको आप वहां से नहीं हटाओगे. अगर स्काई खेलते हैं तो मैं स्काई को 3 में खिलाऊंगा, लेकिन जब विराट कोहली टीम में है, I don't see it happening. I would much rather see someone like a Shreyas Iyer, who I think has a lot more to show and to prove for Indian cricket than Surya Kumar Yadav does. I mean, I'm a big fan of Yadav in the IPL, and I'm very very glad कि इतने साल के बाद, इतने समय के बाद अपने आप को प्रूव करके डोमेस्टिक और आईपीएल में सूर्य कुमार यादव को एक चांस मिला. But right now, at least for the first match, I would rather go for Shreyas Iyer, because we've seen him play test cricket, so I would want to get a bit more out of them. Also, Ishan Kishan, very very good option. ये भी दोस्तों एक ओपनिंग ऑप्शन है, अगर शिखर धवन को मैनेजमेंट ने वो लंबा रस्सी नहीं दिया जैसे उन्होंने टेस्ट में पुजारा और रहाणे को दिया. आई स्टिल फील, जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में कहा था, कि शिखर धवन के अगले साल का ओडीआई वर्ल्ड कप में एक रोल है. आई डोंट थिंक ही हैज एनीथिंग टू ऑफर नाउ इन टी20s, स्पेशली जब इस साल का टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा. So at least for the first 2 matches, I would like to see what Shikhar Dhawan can do. If it doesn't work out, then you have the option to give Ishan Kishan a chance as the opener. But again, he is not a starter for my 11. Partha Sama saying, Sky above Shreyas Iyer makes more sense. He's more attacking and befits the attacking tempo that India is slowly adopting to. Yes, I agree with what you're saying, but I just think it comes down to which of the two batsmen, yani ki Surya Kumar Yadav or Shreyas Iyer, does the Indian cricket think it's going to get more out of going down the line the next 2-3 years? For me, the answer is Shreyas Iyer. He could even be a future leader, at least in white ball cricket. He's done well for India in ODIs. He's a kind of player, he just looks a bit more stable than Surya Kumar Yadav. Surya Kumar Yadav is a very attacking, dashing, innovative batsman as compared to Shreyas Iyer. Often starts like a hurricane, but then fails to take it forward. Not taking away from what all he's achieved. I think he's probably a better fit right now in T20s at number 3. But I would just rather see Iyer given a bit more reward, given all that he's done for India in his career. So ये था दोस्तों मेरा 11. कल दोस्तों आज के टाइम के 3 बजने वाले हैं. कल 2 बजे इसी टाइम IST पहला वनडे मैच है. South Africa, of course, are pumped up after winning the Test series 2-1 after being down 1-0. ये डिफरेंट फॉर्मेट है. ODI क्रिकेट और T20 क्रिकेट में इतनी सफलता नहीं मिली इस टीम को. आई थिंक टेम्बा बोमो के ऊपर बहुत बहुत प्रेशर है. But again, you never know. I would say India are the favorites, despite a few problems like the absence of Rohit Sharma and a couple players perhaps at the end of their careers, and a couple other ones like Ashwin trying to make a comeback. Ashwin and Bhuvneshwar Kumar खास करके, keeping in mind अगले साल की जो ODI विश्व कप है. But overall, because India have just been such a force to reckon with in ODIs under Virat Kohli, despite the fact that 4.5 years ago they lost the final of the Champions Trophy, and then they were knocked out in the 2019 ODI World Cup semi-final. The fact that they're consistently performing as a one-day team, I think it's fantastic to see that. तो दोस्तों,
ये था मेरा प्रीव्यू। अगर कोई और सवाल है तो मैं रुक सकता हूँ इस लाइव स्ट्रीम पे आपके लिए। I've got some very very good questions. हाँ, I think I missed one from Parth. I have an opinion that players who play for India in T20 should bat or bowl in a similar position in IPL compared to international cricket. I mean, that's a pretty straightforward um, observation, Parth. You don't want to take players out of their comfort zone unless in the case of Venkatesh Iyer, जो कि KKR में उनका एक रोल था ओपनिंग में, एमपी के लिए उनका एक रोल था टॉप ऑर्डर में। बट जब आपके पास इतने बड़े सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं इंडियन टीम में, एंड अंटिल यू टेल शिखर धवन के भाई गब्बर आपका टाइम हो गया, देन देयर इज नो वे दैट ही कैन ओपन, क्योंकि इन अ परफेक्ट वर्ल्ड you'd have रोहित शर्मा ओपनिंग and you'd have Shikhar Dhawan opening, then you have Virat Kohli and four. So जब Venkatesh Iyer is also being pigeonholed into that Hardik Pandya middle order all rounder slot, like I said, hats off to him for going back to Vijay Hazare Trophy, changing his role in the team, going from opening to number five, and then being so bloody consistent. So that's probably the only player we can see playing in a different role from the IPL to the Indian team. But again, he's there. Um, he's there because of a vacancy from Hardik Pandya and because he's had a very good IPL. I knew I forgot someone. Soumyadeep is right. He said, you forgot to mention KL Rahul in a starting 11. Of course, how do you leave out the captain? I was thinking, I know I forgot one batsman. Then I'm putting, then I'm putting KL Rahul there. और फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर का जगह नहीं बनता, because then you have Pant and Venkatesh Iyer as the seam bowling all-rounder to follow. सर्वेश बोर्ड के पूछ रहे हैं, who are the key SA players India has to look out for? Kagiso Rabada. Kagiso Rabada, after getting an earful in the dressing room from his skipper Dean Elgar in the Test series, roared back into the series and literally played a big role in South Africa coming back to win the series 2-1. He's going to be a bowler who's hungry to do well. स्पेशली अगर आप T20 वर्ल्ड कप में आप उनको देखें तो 2-3 मैच में वो मार भी खाए थे वो. He's someone they have to watch out for because he knows these conditions. I think Rassi van der Dusen is an outstanding player. Not the youngest player in the setup, but he's a guy who's really can bat really, really well. So he's one they have to watch out for. Quinton de Kock, we know what Quinton de Kock can do as an ODI player. In fact, all formats. लेकिन क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से retirement लिया है, there's a lot more pressure on him to perform now. And I'm sure because he's taken the decision to say goodbye to the test format and just focus on ODIs and T20s, he himself will know, I really have to do a lot more than I've been doing of late. So he's a guy you really, really have to work out for, have to watch out for. Uske baad, there's another very, very interesting player in the South African setup, Aiden Markram. You look at Aiden Markram, he has changed his position in the T20 team, or someone has told him to change. He used to open in T20s. Now we've seen him batting at 3 and sometimes number 4. He's also been bowling a bit of off spin. We saw him bowl in Sri Lanka. We saw him bowl in the IPL for Kings 11 Punjab. Sorry, Punjab Kings, जो उनका नाम change हुआ था. But Aiden Markram, despite being superbly talented, has had a horrible test series against India. Mohammad Shami ने उनका भूत बना दिया था. He was not sure where his off stump was. He was getting those nagging lengths. He's very much a part of the ODI team and a very, very crucial part of the ODI team. कहाँ Aiden Markram को खिलाते हैं ये South Africans, वो देखना पड़ेगा. And I just think the switch to formats, a format where he's been slightly more successful and overall of late, might just see a very, very different Aiden Markram pose a serious threat to India. So he's another player I would watch out for if I were India. Vinod Kaka is back. Good, you're a very regular feature on these live streams, Vinod Kaka. Thank you. Do you think South Africa again offers bowling friendly pitches and ODI series as what they offered us during the Test series? Good question. I would say no. अगर हम South Africa को देखें पिछले 5-7 साल में, I think probably outside of India and to an extent England, because England have smaller venues. I think South Africa is one country जहाँ पे people like to go and bat. I remember there was a series a few years ago जहाँ पे it was against Australia. उसमें लगातार South Africa, I think they beat Australia 5-0. शायद 2016 की बात है, मुझे याद नहीं. But in that series, I mean, big targets were being set and big targets were being chased. And since then, you've seen a lot of high-scoring matches. So something about the South African tracks when it comes to white ball cricket, by design or पता नहीं, I'm guessing it's by design, वहाँ पे run अच्छे बन सकते हैं. So you might see if teams have a good day,
You might see 330, 340 be the average score in this series. So I don't think you're going to get much bouncy tracks or bowler friendly tracks, because Test cricket is a different beast, and one day cricket obviously offers something else for the fans. And I just think the switch of formats really makes a difference. And जहाँ तक मुझे याद है पिछले 5 साल की बात करूँ, there have been a lot of high scoring matches in South Africa. I remember distinctly. Of course, De Villiers तो थे ही freak player, but आमला and de Kock opening करके बहुत matches में बहुत बहुत बड़े century plus stand लगा चुके हैं, 150 200, and so that just leads me to believe that batting is going to be very very easy in this series. Yes, Karthik Matpal, Yanman Malan. Bilkul, Malan, in a very short span of time, has proved himself in white ball cricket for South Africa. He's also one I think they should invest in for the future. And pretty much जितना भी मैंने इनको देखा है against Pakistan and against, I think it was West Indies, against Sri Lanka, he also had some good runs. So yeah, he's definitely one to watch out for. I think South Africa, I know okay, they roared back in the Test series and they've done really well, but in ODI cricket, they're still trying to figure out, what to do. De Villiers is not there. Faf, David Miller is probably on his last legs as an international cricketer. They have certain players trying to make a name for themselves. इनका अक्सर problem होता है combinations का. Do we go for Fekluguayo? Do we go for Dwayne Pretorius? Do we go for Leon Mulder? Who's the all-rounder? Wayne Parnell has come back. If they can just get the right 11 on the park, they should be a good team. But I'm putting India down to win this series 2-1. If not 3-0, India 2-1. Chaliye, Parth, last question from you. Venki Iyer is not an exception. Ahmedabad will be reluctant to have their captain Pandya batting at 6. Similarly, Delhi might not be incentivized to play Pant at 5. यार ये तो आपने IPL पे आपने एक रुख मोड़ लिया. I know a lot of things have been happening with the IPL. I think the Ahmedabad franchise has got to Shubman Gill and Hardik Pandya. And I saw the news. I've not been following that news too much. I've been switching from test mode to one-day mode. But similarly, Delhi might not want to be incentivized to play Pant at 5 in the IPL. आप normally तो 4-5 पे ही खेलते हो, लेकिन जब आप कप्तान हो Delhi Capitals की, so a lot of it just depends on where you yourself fit. I think Pant would be a good option at number 4 for Delhi Capitals. In ODIs में 5 और 6. Look, keep in mind, despite as brilliant he's been in Test cricket overall for the last year and a half, Pant is yet to hold down his place in India's ODI and T20 team. He's not got big runs yet. His keeping has been a bit problematic, more so in T20s. So Pant is a player that also needs to really hold down his spot, because there are several questions. Aaj aap keh rahe hain, you were referring to your previous question. Never mind. Sorry, Parth. I've got stuck in the stream of questions here. Abhay Bisht. Okay, Abhay Bisht, welcome. My question is: will the recent performance in the Indian team affect the players' performance? I don't think so, because if it's going to affect anybody, it's probably going to affect Virat Kohli, because he's lost a series that he expected to win. He believed India could go and win for the first time in South Africa. वो नहीं हुआ. He was shocked when he got that back spasm that knocked him out of the second test. ऊपर से his batting was not what he and all of us expected it to be. There's a whole drama of him being stripped of the ODI captaincy. So I think perhaps if anyone could be affected, it's Virat Kohli, but he's such a champion player and so aggressive. I would hope that it doesn't get to him. Baki players, I don't think they'll be affected by what happened in the Test series. They know it's a different format. A lot of players were not part of that series. They've come from India, So a new dynamic, a new vibe in the dressing room. I don't think it'll be a problem. और जैसे कि मैंने कहा था, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया इस सीरीज को 2-1 से they'll win by 2-1 if not 3-0. दोस्तों चलिए, you've heard from me my playing 11 with a bit of a fumble there of not putting in the captain of the team. My bad, I had so many thoughts racing in my head plus the question, but overall thank you for joining the stream. Do like, share, subscribe, and आप मेरे साथ फिर से जुड़ सकते हैं इस पूरे one-day series के चलते on Cricket Fables with Jamie and Meha. Meha will also make an appearance. She's not here right now because she's doing another interview right now with Indian football superstar Sunil Chetri for the news channel she's with, News 9. So that's why she couldn't make this. The time that I had decided to do this live was already a time that she had given to Sunil Chetri for that interview. But yes, a lot of you said, Meha kahan hai? So she will be back as frequent as her schedule allows her to be. Thank you once again.
Have a good day and a good week, and come back and see me all through the ODI series. Goodbye for now.